Hello everyone, I am Priti Mato and I am back with another chapter, chapter 3rd, which is motion of the earth. So let's start. The earth has two types of motions, okay. First is rotation and second is revolution. What is rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. रोटेशन का मतलब होता है जो मूवमेंट अर्थ करता है वो अपने एक्सिस में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन. नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन. द अर्थ मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं. अर्थ जब किसी एक फिक्स्ड पाथ में होके और सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑर्बिटल प्लेन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. और वो जो plane form करता है orbit में उसको हम लोग orbital plane बोलते हैं. Okay. Next is the earth receives light from the sun. जो हम लोग जैसे कि पता है सबको कि अर्थ का खुद का लाइट और हीट नहीं है, वो सन से लाइट लेता है, ओके, रिसीव करता है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. मतलब ये है कि अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है जिसके वजह से सन वन टाइम में मतलब हाफ अर्थ में ही ये लाइट दे पाता है, ठीक है. एंड द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, मतलब जिस साइड का पोर्शन सन के साइड जो पोर्शन होता है उसको वो डे एक्सपीरियंस करता है, वाइल अदर हाफ अवे द सन एक्सपीरियंस नाइट, और उसके जो अपोजिट साइड होता है वो नाइट एक्सपीरियंस करता है. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द फिगर to show day and night due to the earth's rotation. Okay, and what is circle of illumination? The circle of that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. So this is the line of circle of illumination, जो कि डे इधर है, नाइट इधर है, मतलब सन का पोर्शन जिस साइड है वो डे होगा और जो उसका अपोजिट है वो नाइट, और इस लाइन को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. ओके, एंड द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ को 24 आवर लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस में. ओके, The period of the rotation is known as the earth day, और उस पीरियड में जितना टाइम लगता है उसको अर्थ का 1 डे बोला जाता है. ओके, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ और ये पर डे होता है. दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, एंड दिस इज एक्सिस. ओके, एंड दिस इज द सन टू प्रोवाइड लाइट of the earth. And next is what happen if the earth did not rotate? क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करता? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. तो अगर जिस साइड मान लीजिए अभी डे में है, ठीक है, और ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इधर का जो पोर्शन है वो गर्म होते जाएगा तो उसमें फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. एंड अदर कंडीशन, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस
एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और वहां पे फ्रीजिंग हो जाता अदर सेक्शन में जहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, ओके, और वो हमेशा ठंडा ये करता, तो इन दिस केस भी कि मतलब वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता. सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन में जब अर्थ रोटेट नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होता. And next is the second motion of the earth around the sun. It is orbit called revolution. जैसे कि मैंने पहले बताया था revolution क्या होता है. It takes 365 and 1/4 days 1 year to revolve around the sun. मतलब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर लगता है उसको, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन. ओके, वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ओके, सो 6 hours saved every year are added to make 1 day 24 hour over a span of 4 year. 4 year के बाद वो जो है मतलब 6 घंटा जो हर साल बचता है हम लोग के पास, उसको 14 साल में हम लोग एक और डे बनता है. This surplus day is added to the This surplus day is added to the month of the February, जिसको जो कि 1 डे होता है उसको हम लोग February मंथ में ऐड करते हैं. Thus every 4 years February is a 29 days. 4 साल के बाद February 29 डेज का होता है, जबकि ऐसे नॉर्मल में वो 28 डेज होता है. ओके, so next is such a year with 366 day. नॉर्मली 1 ईयर का होता है 365 डेज एंड 6 आवर, तो उसको हम लोग फिर जो 6 आवर हम लोग के पास बचता है उसको ऐड करते जाते हैं, तो 4th साल में वो एक और दिन बना के यहाँ 66 डेज बन कर देते हैं. ओके, इसको हम लोग जब वो 66 डेज हो जाता है एवरी 4 ईयर के बाद, तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं. ओके, and this is the revolution of the earth and season. This is sun, this is the earth revolve around the sun in a different season. First of all, this is autumn in North Pole, and this is earth, North Pole, South Pole. It is rotated in its axis as around the sun. This is 24 equinox, 21st March, spring, autumn. This is the summer in the northern hemisphere, summer solstice. ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी. summer solstice, equinox, winter solstice and equinox. Okay, so this is the figure of revolution of the earth around the sun and how seasons are changed. So in this figure it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. ये फिगर जो है वो आपको क्लियर करता है कि ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. ठीक है, उसके बाद नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और सारा जो ये अर्थ है वो सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड कर रहता है. ओके, उसके बाद ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर. जो ईयर है वो डिवाइडेड रहता है मतलब 4 सीजन्स में. दिस इज समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन एंड season. Okay, season changes due to the change in the position of the earth around the sun. Okay, look at the figure. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस फिगर में
On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, they receive more heat, और जिसके वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा रिसीव करता है. ओके. The area near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Okay. And since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21st जून में सबसे longest day ये होता है और shortest night होता है. Okay. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The night are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. Okay. Next is on 22 December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. And next is, as the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, और जो sun का जो rays होता है वो vertically 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere get lights. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This portion of the earth is called the winter solstice. On 21st March and September of 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, winter of the poles is tilted toward the sun. So, the whole earth experiences equal day and equal night. This is called equinox. Equinox का मतलब ये होता है कि मतलब जिस टाइम डे और नाइट इक्वल हो, इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डे, this is called equinox. Okay. Next is on 23rd September. It is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. Okay. The opposite is the case on 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Okay. Next is, thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. Okay, thank you so much guys.